Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi Batra and this is where you get all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुभारंभ करते हैं आज के इस ट्रेडिंग सत्र का। आपको पूरा ट्रेड सेटअप बताएंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या ग्लोबल क्यूज हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं आज के मार्केट्स के ट्रेड के लिए। फटाफट से पहले देखते हैं कि हैंडओवर कैसा मिला हमें कल के ट्रेडिंग सेशन से। लगातार 5 दिनों के कंसोलिडेशन और वीकनेस के बाद बुल्स ने थोड़ा बहुत वापसी जरूर करने की कोशिश की। पूरे दिन भर में हम हरे निशान में तो टिके रहे लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। लेकिन टुवर्ड्स द क्लोज अगर आप देखेंगे तो जो अर्ली गेन्स थे वो कम हुए और फ्लैटिश टू पॉजिटिव बायस के साथ बेंचमार्क इंडिसेस कल के सेशन में बंद होते हुए नजर आए। अगर आप सेंसेक्स पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 50,000 के नीचे के लेवल पर ही हम बंद हुए हैं 49,751 पर और बहुत ही माइनर 7 पॉइंट्स का अपटिक यहां पर दिखा 0.01% तक की तेजी। और वहीं अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी 14,708 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हुई है, यानी कि 32 अंकों की बढ़त यहां पर दिखी 0.22% तक की। और अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में 14,700 का जो क्रूशियल लेवल है वो डेफिनेटली टिका हुआ दिखा हमें टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेशन। आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर हम ओपन होते हैं पॉजिटिव में तो ये देखना जरूरी होगा कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी अफेक्ट करती है आज की ट्रेडिंग सेशन में। और जो सैक्रोसैंक्ट लेवल होगा, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 14,650, 14,030, 635 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से ट्रेडर्स के लिए वॉच आउट करने के लिए। एक नजर डालें अगर आप निफ्टी बैंक पर तो आप देखेंगे कि केवल यही इंडेक्स थी ब्रॉडर मार्केट्स में और मेजर मार्केट इंडिसेस में जो कि आधे प्रतिशत तक के आसपास की वीकनेस के साथ बंद हुई। तो ज्यादातर जो प्रेशर कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा वो हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में देखने को मिला, जिसकी वजह से जो गेन्स थे अर्ली मॉर्निंग के वो सस्टेन नहीं हो पाए टुवर्ड्स द क्लोज। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस नजर आई है। मिड कैप सेक्टर में 1% तक की बढ़त, वहीं 0.7% तक की तेजी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिखी 19,806 के लेवल्स पर यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। एक नजर डालते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या देखने को मिल रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड व्यू में देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट संकेत हमें यूएस मार्केट्स में ये देखने को मिला कि फेडरल रिजर्व का क्या अपडेट आया। अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट फेड चेयर जेरोम पोवेल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए थे वो ये दर्शा रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स अभी भी अपनी जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, उसे ही सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल के लिए उन्हें ये भी बोला कि इन्फ्लेशन की तरफ से अभी कोई ज्यादा ऊपर में खतरा नहीं है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये था कि इकोनॉमी में लेकर कोई भी मैक्रो इंडिकेटर्स सर्टेन तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि रिकवरी जस्ट इन द ऑफिंग है या नहीं। तो डेफिनेटली इसे भी वॉच आउट करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यू जो हमें मिला है वो ये कि जो लिक्विडिटी है बाजारों में जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आई है वो अभी भी सस्टेन रहेगी। और इन स्टेटमेंट्स के बाद अगर आप देखेंगे ओवरनाइट जो वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी यूएस मार्केट्स में वो डेफिनेटली रिकवर होती हुई नजर आई है। देखते हैं कि यूएस मार्केट चेक किस तरीके से बंद हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में बहुत ही माइनर पॉजिटिव्स के साथ यहां पर 0.05% तक के अपटिक के साथ क्लोजिंग हुई है 31,537 में। एक तरफ अगर आप देखेंगे ओवरनाइट हमने काफी डीप कट्स देखे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ अकोमोडेटिव स्टेटमेंट्स एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट हैव कम आउट फ्रॉम द यूएस फेड, वी एक्चुअली सॉ दैट देयर वाज सम बिट ऑफ रिकवरी फ्रॉम दोज काइंड ऑफ लो पॉइंट्स एंड लो losses that we were seeing in the overnight entire trading session. You can actually see a reflection on the S&P 500 as well that actually closed with 0.13% gains at 3881. Also Nasdaq shut shop with 0.5% loss. Remember this is also after recovering most of the losses or a major of the cuts that we were seeing in the overnight trade. It shut shop at 13,465 in the last days or overnight trading session as well. Moving on to the cues that we are getting from the Asian markets, it's all red for now. They opened lower. In fact, if you talk about it, the Nikkei was down about 0.7%, 1% loss for the Hang Seng, and 0.9% or 0.8% loss for the Shanghai Composite Index as well. Now, they actually opened lower because of the concerns about rising interest rates and rich, equity valuations following a draft down from the US and European overtrading. Remember, the European markets also shut shop in the red as well. So they were actually taking a cautious view from the global cues that they were already seeing. Let's move on to see how the SGX Nifty is trading at the moment. Now, there's a green tick that you can see on your screen. 0.5% gains for the SGX Nifty, 14,788, and this may indicate a positive opening for the Indian markets yet again. So the bulls will heave a sigh of relief for sure.
in today's trading session as well, but you'll have to really see whether the momentum really sustains towards the close of the session as well. Remember, it's the penultimate day of the FNO expiry of the series as well, so we may see heightened volatility. If you remember, in the last 4 or 5 trading sessions, we've already seen the India VIX actually rise from about 21 to about 24, 25. So that's the kind of increase that we are actually seeing on the volatility front as well. Money market in front of you too. The rupee has been trading at 72.47. That's with just minor gains of about 0.05% against the dollar. So this is still likely to be in the range and not too much impact on the markets is what we can expect from the money market so far. Also moving on to the crude oil markets, what are we getting over here? Slight bit of profit booking. You can actually see that the oil prices had risen day before yesterday, and the cues that we were getting was like a sharp uptick of about 3.5% in the last trading session. But if you see overnight after this, we have been seeing some bit of a downtick as well, 0.7% and 0.9% for WTI and Brent crude. And when you talk about the Brent crude level, it's now down from 65 and above and 66 and above to $64.93 to the barrel. As far as the WTI or the NYMEX crude is concerned, that's down about 1% and is trading at $61.08 to the barrel as well. Remember that the oil prices had fallen in the early trade on Wednesday after the industry data really showed that the US crude inventories had unexpectedly shot up, and that was due to in the last week, and that was amid the deep freeze that had hit the refiners and led to production halts as well. So moving on from that front as well to the stocks that you need to keep on your radar. That's the stock to really watch out for. Remember, even in yesterday's trading session, it shut shop with about 2% gains. Tata Consumer Products, it's going to be in news for a while as the company will be replacing GAIL India in the Nifty 50 index from March 31st of 2021. So that's going to be a sentimental positive that you could see, for the company and the stock also. Going on to another stock that you need to keep an eye out on. So from the pharma space, it's Pfizer. That's going to be, important to track. Brazil has now approved Pfizer's COVID vaccine for the widespread use as well. So remember, that's again another positive trigger for Pfizer. You can actually see a reversal of the trend that we were seeing in yesterday's trading session on that stock. Another stock that you need to track from the same space is Sanofi India. From the healthcare space, it was up about 0.7% in early trade yesterday and towards the close as well. But if you see, the company has approved a final dividend of about 125 rupees per share and a special dividend of about 240 rupees per share as well. So sharp uptick can also be expected and a continuation of the rally from yesterday's trading session, because the investor sentiment will definitely be quite positive after listening to this news. Another stock that you need to track from the power space will be NTPC. Remember कि ये जो स्टॉक है ये लगातार कई सेशन से अपनी गेनिंग स्पेस में अपनी जो जगह है वो बनाए हुए है और 1.5% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक कल भी बंद हुआ था. अब कंपनी ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट गेल के साथ एग्जीक्यूट किया है, जिससे कि वो गेल की 25.5% शेयर होल्डिंग जो है रत्नागिरी गैस में वो उसको और साथ ही साथ एग्जिट करेगा कोंकण एलएनजी से. तो कहीं ना कहीं ये जो अग्रीमेंट का इम्पैक्ट है ये भी आप स्टॉक प्राइसेस में आज ही देख पाएंगे. आगे बढ़े तो देखते हैं कि स्पार्क में, सन फार्मा एडवांस में आपको किस तरीके का यहाँ पर मूव देखने को मिल सकते हैं. ऑलरेडी ये पेनी स्टॉक हो चुका है. अगर आप देखेंगे 10% तक की वीकनेस हमें कल भी दिखी थी. अब यूएस एफडीए ने न्यू फेज 3 स्टडी कैंसर ड्रग टेक्लांटिस को लेकर मांगी है और उस वजह से भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके के रिएक्शंस आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं. क्या यहाँ पर और कट्स देख पाएंगे हम या नहीं. आगे बढ़े तो शिप बिल्डिंग स्टॉक मैज़ागॉन डॉक के बारे में भी बात करते हैं. 3.5% तक की मजबूती कल दिखी. एंड द कंपनी हैज साइंड एन MOU विद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इन मैरिटाइम इंडिया समिट 2021. So you can actually expect some bit of a sentimental positive on this stock as well. Moving on to the IPO update now. Hiranba Industries IPO opened for subscription in yesterday's trading session. So far on day one, it was subscribed 84%. The IPO will close tomorrow. That's February 25th. So we'll just have to see what kind of an, a response do we see from the retail participation as well as from the other segments like QIB and the institutional investors as well. Remember, it's a 625 crore rupee IPO, which actually consists of both an OFS as well as fresh issue of shares, and the company will be using the proceeds for its working capital requirements as well.
So we'll go on to see, in case you still need to, understand whether you should go for this one and should subscribe to this IPO or not. You can go on to money9.com and read all the comments from the top brokerage houses as to how they really analyze the company and talk about the company, and what kind of recommendation do they have on this IPO for all the investors as well. Okay, let's move on to all the stock recommendations then. The first stock recommendation from Rohit Singre from LKP Securities is on Balrampur Chini. Now he asks investors to buy the stock. Already the stock has been in momentum, 7% uptick for this one. The stop loss you can keep on the stock would be 168 with a target price of about 200 on the stock. 180 is the current level, so you can expect about a 20 rupee upside from the current levels as well. Moving on to another stock that he has recommended, again from the power space, is Tata Power. That could be in limelight. He's also suggested investors to buy the stock after the 2% uptick that was seen yesterday. There could be further upside. A stop loss you need to maintain on the stock would be 91 with a target price of about 98 rupees per share. Another stock that he has on his list would be VRL Logistics. Remember the company again, and the stock again was moving up yesterday with 1.5% gains. The stop loss you need to keep on the stock would be 243 with a target price of 267 on the upside as well. बाकी की जो 3 कॉल्स हैं वो मानस जायसवाल की तरफ से हैं। पहला पिक उनकी तरफ से अगेन बाय लिस्ट में है। कमेंट्स इंडिया पर वो बेट कर रहे हैं। 5% तक की तेजी कल दिखी। स्टॉप लॉस आप यहां पर 780 रुपए का लगाएं और 840 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। अगला जो स्टॉक वो यहां पर रेकमेंड कर रहे हैं वो शॉर्ट साइड पर रेकमेंड कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक प्राइसेस में कल भी हमें काफी शार्प गिरावट देखने को मिली थी, करीब 4% तक की गिरावट थी, और ये निफ्टी लैगार्ड्स में सबसे बड़ा नाम भी था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऊपर में 1921 रुपए का बताया जा रहा है और 1800 रुपए तक ये स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है, तो आप यहाँ पर टारगेट नीचे का 1800 रुपए का रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक वो रेकमेंड कर रहे हैं वो है टाटा स्टील। लगातार मोमेंटम में है टाटा स्टील, 7% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स कल भी आउटशाइन किया और इन जैसे नामों की वजह से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आया। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाइए 714 रुपए का और 765 का आप टारगेट प्राइस लगा सकते हैं और ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो चलिए फिलहाल इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा मनी 9 के साथ, क्योंकि मार्केट का पूरा कवरेज राइट फ्रॉम द ओपनिंग एक्शन जारी रहेगा मनी 9 पर।